Next question on your final accounts with partnership. See, your 11th standard concept should be thoroughly clear. Then it is easy. If not, go back to 11th standard और final accounts अच्छे से करो. उसके बाद this is a child's play. Okay? So Dulal and Raja are partners sharing profit and losses. From the following trial balance of the firm, prepare a trading and profit and loss account and balance sheet. Okay. Stock, opening stock 20,000 दे रखा है. So 20,000 opening stock to opening stock 20,000. That is marked. Now purchases 130 200. कोई ना कोई adjustment होगा purchase में. So in the inner column 130 200 हम purchases लिख देते हैं. Sales return, sales में से less होता है sales return. So sales, what is the total sales? First we will have to see 170,500 is your sales. So 170,500 less sales return. So less your sales return. How much is sales return? 500. So less करो 500 यहाँ से. Okay. Debtors 20,000. So debtors 20,000 balance sheet item. So go to the balance sheet and write debtors 20,000. Debtors का कोई ना कोई adjustment है. Let's read the adjustments. Closing stock दिया है. Dulal has taken goods rupees 500 for personal use. Means this is drawing. तो या तो आप परचेज में से लेस करो 500 या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो goods withdrawn 500. Okay, and goods amounting to 3,000 was sold and dispatched on 27/3/77 but no entry was made in the sales book. Means अब सेल्स में ऐड करना पड़ेगा एडिशनल सेल्स. और गुड्स सेल हुआ तो हमारे डेटर्स भी बड़े होंगे, तो बैलेंस शीट में डेटर्स में भी हमको ये ऐड करना पड़ेगा. देन वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है जो कि डेटर्स में जाएगा. सो वी कैन डू वन थिंग. क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 25,000 and market price 30,000. So cost or market price whichever is lower. Lower क्या है? Cost price 25,000. Take closing stock 25,000. Cost price or market price whichever is lower is the formula. This closing stock will also go in balance sheet 25,000. So closing stock here 25,000. And हमारा debtors था 20,000. So debtors in the inner column 20,000. Okay. So closing stock adjustment number 1 हमने कर लिया है. Dulal has taken goods worth rupees 500 for personal use. Means Dulal का 500 drawings है. परचेज में से आपको लेस करना है एंड एट द सेम टाइम उसके कैपिटल में से भी लेस करना पड़ेगा. ड्रॉइंग्स है. सो लेट्स मूव ऑन टू द कैपिटल अकाउंट नाउ. इसमें फटाफट हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं. ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन. सी कैपिटल सेम रहेगा. करंट अकाउंट्स आर गिवन. सो व्हेन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स आर गिवन, ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी डन इन करंट अकाउंट ओनली. So take opening balance of current account. Dulal 2,000 and Raja 2,000. So Dulal and Raja 2,000. And the adjustment is Dulal has taken goods worth rupees 500 for personal use. So Dulal ka drawings 500. Raja has not taken any goods. So that will be written. And at the same time capital आप लिख लो. सी दुलाल का कैपिटल इज 15,000 इन बैलेंस शीट. राजा's कैपिटल इज 15,000 इन बैलेंस शीट. सो द टोटल कम्स आउट टू बी 30,000. एंड हम सारे करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में कर देंगे. यहाँ पर फाइनल फिगर्स रहेंगे. तो ड्रॉइंग अब एक लेस करना है. 500 के गुड्स वर टेकन. सो उसको परचेज में से either subtracted from purchase और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो. सो
1,30,200 minus drawings और goods taken for personal use 500. So लेस कर दो यहां से 500. So हमने सब एडजस्टमेंट किए. दुलाल हैज टेकन गुड्स 500 फॉर पर्सनल यूज. परचेज में से लेस किया, ड्रॉइंग्स में डाला, उसके करंट अकाउंट के कैपिटल में से लेस किया है. ओके, नाउ डेटर्स 20,000. सो डेटर्स 20,000 हमको बैलेंस शीट में इनर कॉलम में डालना पड़ेगा बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग डेटर्स. We have already written 20,000 debtors here. Now wages 6,000. Wages is direct expenses or indirect expenses? Wages is a direct expenses. So profit and loss account debit पे आएगा. Wages direct expenses. So trading account debit and salary indirect expenses. So profit and loss account debit. So wages account 6,000. Debtors is done. Wages 6,000. So wages 6,000 here. Trading account debit. Okay. Royalties direct expenses again. कुछ प्रोडक्शन के लिए यूज होती है. So direct expenses 1,000 again. Royalties. Furniture 5,000. Machinery 30,000. बैलेंस शीट आइटम फर्नीचर और मशीनरी, इस पे डेप्रिसिएशन का हमारा पॉइंट है. So furniture and machinery, let's see, depreciate furniture 15% and machinery by 20%. So let's go to the balance sheet. Furniture amount क्या है furniture का? 5,000. So furniture 5,000. We have written furniture 5,000 and machinery. What is the amount? 30,000. So in the inner column 30,000. अब इसका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट साइमल्टेनियसली कर लो. सो डेप्रिसिएट फर्नीचर. सो फर्नीचर 15%. 15% ऑफ 5,000 कम्स अप टू 750 और आउटर कॉलम में ले लो 4,250 एंड डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट 20%. सो 30,000 माइनस 6,000, 24,000. Now this depreciation 750 plus 6,000 profit and loss account में जाएगा. Depreciation is indirect expense. So to depreciation 750 plus 6,000 comes up to 6,750. So depreciation is also done. And depreciation का adjustment को टिक करो. Okay. Advertisement 4 years. Okay. Advertisement 4 years hidden adjustment है. Advertisement 4 years के लिए दिया है. But remember profit and loss account सिर्फ 1 year के लिए बनता है. तो if 4,000 is for 4 years, 1 year का 1,000 होगा. So to advertisement what you will do, 4,000 जो है वो इनर कॉलम में आएगा and 4,000 में से प्रीपेड हो गया है 3 years का. सो फॉर्मूला इज एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड इज 3,000 बिकॉज 1,000 का ही अमाउंट हमको यहां पर दिखाना है. सो एडवर्टाइजमेंट 1,000 इन द आउटर कॉलम. प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एड आउटस्टैंडिंग एंड लेस प्रीपेड. So prepaid advertisement is definitely my assert. So prepaid advertisement 3,000 I will be marking here. अब advertisement के बाद salaries. Salaries, let's see. Salaries 3,000 and without adjustment. So directly profit and loss account debit side because salaries is indirect expense. So two salaries 3,000. Salaries 3,000 is written here. PF contribution 500. Now your PF contribution is your indirect expense. Provident fund contribution 500. So take it here 500 in profit and loss account debit side.
प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, सो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा वो। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 2000, सो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2000 मेरा एसेट है, ओके। इंश्योरेंस 500 इज इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो वेयर विल यू टेक इंश्योरेंस? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सी राइट इट इन द इनर कॉलम, बिकॉज इंश्योरेंस को मार्क करो, इसका करस्पॉन्डिंग आपका एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹100, सो जिस टिकट की हम ये भी कर रहे हैं, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, सो लेस प्रीपेड 100, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 100, and 400 will be taken out in the outer column. And prepaid insurance, you have paid it in advance, so अच्छी बात है, आपका asset है, so you take it to the balance sheet asset side, prepaid insurance 100, so prepaid insurance 100 to your asset side. Now next, cash 3000, okay, cash तो simply balance sheet asset side item है, so cash 3000 written, cash 3000 is done, okay. Now next, drawings 3500 and 1500, so drawings you will have to deduct 2 drawings in partners capital, your current account. How much? 3500 and 1500 is your drawings, ओके। वो कैपिटल में से लेस हो गई हैं, ये कैश में ड्रॉइंग्स है, तो हमने इसको यहां पर मार्क कर दिया है। ड्रॉइंग्स इज डन। नाउ नेक्स्ट, capital accounts we have already written, current accounts we have written, sales we have written, purchase return, now purchase में से less होगा, purchase return 3200, so less purchase return, purchase return 3200, purchase में से less करो, and now we can take the amount in the outer column, 126,500, purchase less purchase return is done, okay. Interest on provident fund investment, okay, interest on provident fund investment, तो ये क्या है? ये हमारे पास रहेगा provident fund but belongs to us or not? No, the provident fund is kept with us, belongs to the employees, so provident fund का जो investment का interest है, that is also liability, so PF investment interest 200 मार्क करो उसको liability में। provident fund is interest का है यदि 200, तो that is your liability, तो provident interest on provident fund 200 and provident fund 2000, both liabilities, provident fund 2000 and interest on provident fund 200 does not belongs to us, so it is a liability. Commission 300, now commission is indirect income, so commission 300. By commission 300, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मार्क करके रखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड रिजर्व, बट हमको न्यू रिजर्व्स के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है, दैट विल डू लेटर।
Creditors 20,000. So creditors is my balance sheet item. Go in the balance sheet, creditors 20,000. Okay. Now let's see what adjustment we have done and what adjustments we are still remaining with. See, first and second are done. Goods amounting rupees 3,000 was sold and dispatched on, but no entry was done in the sales book. So 3,000 का goods additional sales है, तो add further sales आपको करना पड़ेगा 3,000 here, and 170,500 plus 3,000 is now your sales, and there is a sales return also 500, तो उसको आपको subtract करना पड़ेगा. तो 1,73,000 is in the outer column, and same time 3,000 is additional sales, means debtors has also increased. मैंने उनको सेल किया है तो अब पैसा लेना बनता है. So debtors 20,000 is given. Add 3,000 because there is additional sales. Go to the balance sheet and उसके ऊपर फिर सारे adjustments होंगे. So debtors add additional sales 3,000. Okay. Now 23,000 is your fresh figure for debtors adjustment. Now goods amounting to 3,000 was sold and dispatched. Now this adjustment, third number, is also done. Prepaid insurance amounting to 100, हमने add outstanding less prepaid कर लिया. This is also done. Depreciation we have done, and write off 400 as bad debts and maintain the reserve for doubtful debts at 3% on debtors. Step by step we have to go. We have bad debts, तो 400 हमको bad debts लिखना है. 23,000 में से less bad debts 400. Okay, and maintain the reserve for doubtful debts at 3% on debtors. So पहले bad debts हटाओ. What figure do you get? 23,000 minus 400 less bad debts. उसी पे तो reserve बनेगा. जो already bad है उस पे क्या reserve बनाओगे? So 23,000 minus 400 comes up to 22,600. हाँ, less reserve. अब 3% reserve बनाना है on this amount 22,600. So less reserve 3% is equal to 22,600 minus 3%, 678. Okay, and the amount 21,922 comes out. 21,922 comes out. अब देखो बैड डेट्स और रिजर्व का एडजस्टमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में भी जाएगा. सो लेट्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. This is an important point. You will mostly find it out in the exams. So see, bad debts. Bad debts कितना है? Bad debts, the original bad debts जो आपने देखा कि they have said कि 400 is your bad debts. Write off 400 as bad debts. So bad debts 400 हो गया, right? And new reserve which you are making less करने के बाद 3%, that comes up to 678. So you will add this 678 here. But see here that in the question reserve for doubtful debts 500 is already given in the question. अब नया भी रिजर्व रखोगे और पुराना भी रखोगे, that is not possible. So 678 you have made new reserve. So 500 you should subtract old reserve का amount. So total bad debts में आएगा 400 plus 678 minus 500, that comes up to 578. 578. Okay, so this is also done. बैड डेट्स का भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया है. सो लेट्स सी आवर टोटल. नाउ लेट्स सी द ट्रेडिंग अकाउंट. 173,000 plus 25,000 comes up to 1,98,000 minus
1, 2, 3 and 4 items. That gives you a gross profit of 44,500. 1,98,000. Okay, so by gross profit brought down how much? 44,500. Okay, and commission 300. So total 44,800 comes. Okay, now we have these further items, 6 further items here, and then net profit calculate करो. Net profit का क्या करोगे? Net profit will be transferred to partners capital account in equal ratio, because ratio नहीं दिया है तो equal partners, और दिया है तो that ratio. Okay, so 32,572 comes up to the net profit. 32,572 and 44,800 is the total. Okay, now let's move on to the partners capital account first. Your current account here, इसमें net profit आपको add करना पड़ेगा. 32,572 is your net profit. Equally distribute करो. Whatever adjustment, drawing का adjustment है, net profit का adjustment है, all adjustment in your current account only. Okay, so net profit 16,286 for each partner. 16,286 and 16,286. Add the amounts. 18,286, 18,286. ओके, एंड इसमें से एक ड्राइंग है कैश में और एक गुड्स में, दुलाल का एंड राजा का नॉर्मल ड्राइंग्स. सब्ट्रैक्टेड 18,286 एंड हियर इज द टोटल, एंड 18,286 अगेन. So your balance is 14,286 and 16,786. Okay, so this is your closing balance. जो करंट अकाउंट का हमारा क्लोजिंग बैलेंस बनेगा बैलेंस शीट के लिए. So take these amounts to the balance sheet. Current account 14,286 and Raja 16,786, and the total 31,072. Okay, so this is your total. Let's take the total of the liability side. It comes up to 83,272, and let's take the total of the assets side. That comes up to 83,272. So that matches your balance sheet. Let's do further questions to clear the concept when there is final accounts with partnership. Remember, यदि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है, कीप कैपिटल अकाउंट एज इट इज, उसके अमाउंट्स चेंज मत करो. करंट अकाउंट में आप एडजस्टमेंट करो ऑफ योर ड्रॉइंग्स एंड योर नेट प्रॉफिट.